अथ देवी कवचम् अथ देवी कवचस्य ब्रह्मऋषिरनुष्टुप् छन्दो महिषमर्दिन्यादयो देवता देवी प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। ॐ नमः शाण्डिकायै। शतानीक उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यस्तु कवचं पुण्यं तत्शृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चण्डघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रीति नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तन्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानास्तु शत्रुमध्यगतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गतः न ते संजायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे आपदं न च पश्यन्ति शोकदुःखभयङ्करीं। यस्तु भक्त्या स्मृता नित्यं तेषां वृद्धिः प्रजायते। प्रेतसंस्था च चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना नारसिंही महावीर्या शिवदूती महाबला माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्त हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना। इत्येता मातर सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभितः श्रेष्ठैश्च मुक्तिकैः सर्वा दिव्यहारपलम्भवे इन्द्रनीलैः महानीलैः पद्मरागैः सुशोभनैः दृश्यन्ति रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हालं च मुशलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तयुधं च खड्गं च शृङ्गायुधमनुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानि नित्यं देवतानां हिताय वै। नमस्ते विष्णु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मामिन्द्री अग्नयामग्निदेवता दक्षिणे चैव वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां वायुदेवता उदीच्यां दिशि कौवेरी वैशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्राह्मी च मां रक्षेत् अधस्ताद् वैष्णवी तथा। एवं दशदिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मामग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता। शिखं मे ज्योतिनी रक्षेत् उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भुवुर्मध्ये यशस्विनी नेत्रयोश्चित्रनेत्रा च यमघण्टा तु पार्श्वके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रदरवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले च शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च मृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाख्या चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला। ग्रीवं भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकं नलकूबडी खड्गधारिण्युभो स्कन्धो बाहू मे वज्रधारिणी
हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलिस्तथा नौकान्श्वरेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षन्नरेश्वरी स्तनो रक्ष्मन्महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा मेढ्रं रक्षत दुर्गन्धा वायुग में गुह्यवासिनी कात्यां भगवती रक्षे दुर्मेघन वाहना जंघे महाबला रक्षे जानू माधव नायिका गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे च कौशिकी पादंगुली श्रीधरी च दलग पाताल वासिनी नखां दंष्ट्रा कराली च केशां चैवूर्ध्वकेशिनी रोमकूपानि कौमारी त्वचं योगेश्वरी तथा रक्तं वंशं वशं मज्जं अस्ति वेदश्च पार्वती अन्त्राणि कालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायं छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता तु मे रक्षेत् प्राणन् कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यश कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् रक्षेत् च चाणिका पुत्रान् रक्ष्मिर्महालक्ष्मीर् भार्यां रक्षतु भैरवी धनेश्वरी धनं रक्षेत् कौमारी कन्यकं तथा मार्गं क्षेमङ्करी रक्षेत् विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं च यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्षमे देवी दुर्गे दुर्गापहारिणी सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् इदं रहस्यं विप्रर्षे भक्त्या तव मयोदितं देव्यास्तु कवचेनैवम् अरक्षिता तनुः सुधी पादमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रावतिष्ठते तत्र तत्रार्थलाभः स्यात् विजय सार्वकालिका यं यं चिन्तयते कामं तं तमप्नोति लीलया परमैश्वर्यमतुलं प्राप्नोत्य विकलः पुमान् निर्भयो जाते मर्त्य संग्रामेष्व पराजित त्रैलोक्ये च भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु दिव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं सध्यन्वितः देवी वस्या भवेत् तस्य त्रैलोक्ये च पराजितः जीवेत् वर्षशतसाग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादय स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं वापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले उचराः खेचराश्चैव कूलजाश्च पदेशजा सहजा कुलिका नागा डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महारवः ग्रहभूतपिशाचस्य यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्मण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचेनावृतो हि या मानन्नोति भवेत् राजन तेजवृद्धि परा भवेत् यशो वृद्धि भवेत् पुंसां कीर्तिवृद्धिश्च जायते तस्मात् जपेत् सदा भक्त कवचं कामदङ्गमुने जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा कवचमादित निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धि चण्डी जपसमुद्भवा यावद्भुमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां जपकर्तुर्हि सन्तति देहान्ते परमं स्थानं यत् सुररपि दुर्लभं संप्राप्नोति मनुष्योऽसौ महामाया प्रसादतः तत्र गच्छति भक्तोऽसौ पुनरागमनं नहि लभते परमं स्थानं
शिवेन समतां व्रजेत् इति श्रीहरिहर ब्रह्म विरचितं देव्याः कवचम्। ॐ नारायणाय नमः। ॐ नरोत्तमाय नमः। ॐ देव्यै नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ वेदव्यासाय नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणेभ्यो नमः। ॐ तत्सत्। ॐ तत्सत्। ॐ तत्सत्। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।